Hello everyone, welcome to APTI Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the most important topics for your UPSC CSE Prelims 2026 from the Polity subject. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the Vice President of India. So the former Vice President Jagdeep Dhankad, he resigned, which created the third midterm vacancy. तो जो मोस्टली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दे विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओनली, ठीक है। तो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिस्कस होंगी एज़ कम्पेयर टू सम एनालिटिकल पार्ट। सो हेयर यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ द थर्ड मिड टर्म वैकेंसी। तो जो अर्लियर इंस्टेंसेस थे, तो इन 1969 वीवी गिरी, सो दैट लेड टू vacancy because he resigned. In 2002 Krishan Kant he died, so that led to a vacancy. तो ये तीसरा इंस्टेंट है मिड टर्म वैकेंसी का. So you should know that the Vice President of India, तो ये हमारी सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, आफ्टर द प्रेजिडेंट, एंड दे कम इन द फर्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन टू योर प्रेजिडेंट, एंड दे ऑल्सो फंक्शन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद दे हैव पावर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, दिस यू शुड नो। नाउ द इलेक्शन प्रोसेस दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन योर आर्टिकल 66, ठीक है, उसमें ये बताया गया दैट इनडायरेक्ट इलेक्शन यूजिंग योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सो द वोटिंग इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट एंड द इलेक्टोरल कॉलेज इट कंसिस्ट ऑफ योर इलेक्टेड एज वेल एज द नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या होता है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हेयर आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो वो समझ भी आता है, कॉमन सेंसिकल है कि हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा की बात करें तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग दीज। सो द इलेक्शंस दे आर कंडक्टेड बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द डिस्प्यूट्स दे आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पर द आर्टिकल 71, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आर्टिकल्स का आपको होना चाहिए। देन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मैंशनड बाय आर्टिकल 66 दैट द मिनिमम एज इज़ 35 ईयर्स एंड दे मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा मेंबरशिप, ठीक है, एंड दे मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड दे शेल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर योर आर्टिकल 102. नाउ द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेजिडेंट, ठीक है, एंड द टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ, ठीक है। तो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। देन दे कंटिन्यू टू सर्व अंटिल द सक्सेसर दे ही और शी दे अज्यूम द ऑफिस, ठीक है। तो ये वेरियस provisions regarding the term and the oath, and in case of resignation that is submitted in writing to the president as per article 67, and this resignation it takes effect immediately, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इमीडिएट रेजिग्नेशन हो जाता है, एंड द डेप्यूटी चेयरमैन देन प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. So there are different cases under which the vacancy can arise. For example, resignation हो सकता है, removal हो सकता है, expiry of the term हो सकता है. तो the elections they have to be held after the vacancy, so there is no fixed timeline here, and the new vice president, ठीक है, irrespective वो कब बन रहे हैं, तो they get the full 5-year term, right? Now coming to the removal, so this is important. So the removal it can be initiated in Rajya Sabha, and the requirements are that 14 days prior notice is required. Then effective majority in Rajya Sabha it has to be passed, and by simple majority in the Lok Sabha. So there is no specific ground which has been mentioned, right? So these are some of the important things that you should know regarding the vice president. Now moving to the second topic. So the Supreme Court ruling on the assent to the state bills, ठीक है। तो इसका क्या कंटेक्स्ट है कि बिकॉज ऑफ द डिले इन द असेंट टू दीज बिल्स विच आर सेंट बाय द स्टेट्स, तो दिस कॉजेज लेजिस्लेटिव अनसर्टिनिटी, ठीक है। तो जो आपका आर्टिकल 201 है, सो इट लैक्स अ टाइमलाइन, जिसकी वजह से गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, एंड दिस लेड टू द जुडिशियल इंटरवेंशन बाय योर सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आपके कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स? सबसे पहला आपका आर्टिकल 200
ठीक है, तो गवर्नर दे कैन गिव द असेंट, दे कैन विदहोल्ड द असेंट, दे कैन रिटर्न एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल, दे कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट. एंड नाउ अंडर द आर्टिकल 201, ठीक है, अब 201, नाउ द प्रेसिडेंट ऑल्सो दे कैन गिव द असेंट, दे कैन विदहोल्ड द असेंट, दे कैन रिटर्न इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल. ठीक है, तो यहाँ पर कोई टाइमलाइन सेट नहीं है. सो दिस लीड्स टू व्हाट, अ पॉकेट वीटो टाइप ऑफ सिचुएशन, पॉकेट वीटो. ठीक है, तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टाइमलाइन. ठीक है, सो द प्रेसिडेंट दे हैव टू एक्ट विद इन 3 months, एंड द डिले दैट हैज़ टू बी जस्टिफाइड विद क्लियर रीजंस कि क्यों डिले हो रहा है. ऑल्सो देर इज़ नो एब्सोल्यूट वीटो, नाइदर द गवर्नर नोर द प्रेसिडेंट दे कैन एक्सरसाइज द एब्सोल्यूट वीटो. तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है विद रिस्पेक्ट टू, आप अगर बोले प्रेसिडेंट, सो अ टाइमलाइन कि भैया आपने 3 महीने में करना है. अगर हम बात करें गवर्नर की, सो व्हेन द गवर्नर इज एक्टिंग ऑन एड एंड एडवाइस, तो दे हैव टू एक्ट विद इन 1 month. ठीक है, अगर एडवाइस के तौर पे कर रहे हैं, व्हेन एक्टिंग अगेंस्ट द एडवाइस, ठीक है, सो दे कैन रिटर्न द बिल विद इन द 3 months और दे कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट विद इन द 3 months. ठीक है, अब ये तो हो गया जब व्हेन एक्टिंग अगेंस्ट द एडवाइस है. नाउ आफ्टर रिकंसिडरेशन, ठीक है, आफ्टर रिकंसिडरेशन अगर दोबारा से लेजिस्लेचर आपका बिल को दोबारा पास कर रहे हैं, सो नाउ द गवर्नर हैज़ टू गिव द असेंट विद इन द 1 month. ठीक है, तो द रीपास्ड बिल, the assent is must within 1 month. Now there are certain judicial safeguards with respect to this. So the courts, they can intervene in the case of unreasonable delay. Okay, so what is the remedy here? The mandamus, writ of mandamus is there. So this ensures the accountability without interfering in the merits. ठीक है, so now the president का क्या रोल रहता है? So president is basically acting on the aid and advice of your union council of ministers. So they were not bound to give the reasons earlier, but now a greater transparency we can expect, right? So earlier there was no fixed this constitutional timeline, but now that has been judicially guided, right? So there are certain case laws also here, like your Shamsher Singh versus the state of Punjab, ki governor is bound by the ministerial advice. Fir Rameshwar Prasad case of 2006 that led to limits on the governor discretion. फिर एक आपका नबम रेबिया वर्सेस द डेप्यूटी स्पीकर केस ऑफ 2016. सो अगेन इट रीइंफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल boundaries. In the state of Tamil Nadu versus the governor of Tamil Nadu, Supreme Court used the article 142 and it said that assent it is deemed in nature in exceptional cases. So these are some of the Supreme Court rulings that you should be aware of. Next, NPS, UPS. So there are different pension systems, so you should have an idea, a comparative analysis of these systems. So basically क्या हुआ था पिछले साल, the government had extended the deadline for switching from your national pension system to the unified pension scheme till 30th September. ठीक है, around you can say half of 2.3 million around employees they were eligible, but only 40,000, ठीक है, adopted this. So the adoption rate was very low. So this scheme, basically this UPS, Unified Pension Scheme, so this is an optional scheme under your national pension system. It was introduced in the year 2025 April, and the rules are notified under your Central Civil Services Rules 2025. ठीक है, so the new employees, the April to August 2025, they are also allowed to opt under this particular scheme, and the employees, they could switch UPS to NPS once, but they cannot return to UPS after switching back. So these are some of the conditions under this. Now you should know what are the different pension systems that we are having. So सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए OPS,
ठीक है. So this was applicable before 1 January 2004, and the benefit under this your old pension scheme, that 50% of the last drawn salary, so that was the defined benefit, and there was no employee contribution under this. फिर आपका आया एनपीएस. ठीक है. अब एनपीएस इट बिकेम मार्केट लिंक्ड, इट डिफाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 10%, एम्प्लॉयर का, द गवर्नमेंट का आपका हो गया 14%, एंड द पेंशन दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉर्पस. ठीक है. नाउ कमिंग टू योर यूपीएस. ठीक है. सो हेयर द एश्योर्ड पेंशन इज 50% ऑफ योर एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 months. And the second condition, that minimum service of 25 years is required. Okay. Again, one more here the minimum pension is that rupees 10,000 per month after 10 years would be there. Okay. And the family pension would be 60% to the spouse. Right. So these are some of the conditions that you should be aware of. So what is the key difference between this UPS and NPS now? So UPS, we are having assured pension, there is minimum guarantee, and there is a hybrid model, contribution plus defined benefit. In the NPS, that was market driven returns, there is no guaranteed pension, and there is higher flexibility. So these are some of the differences you should know. So I would suggest to you that you should make a table. ठीक है. आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप 4 columns बनाओगे. 1 column would be the features, then OPS, NPS and UPS, and on the basis of features you are differentiating between these 3 systems. For example, टाइप में आप OPS के अंदर जैसे मैंने बताया था डिफाइंड बेनिफिट वॉज देयर, NPS में द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर, whereas in UPS we are having hybrid model, defined benefit plus defined contribution. Similarly, government contribution कितना था OPS में, fully government funded. In NPS 14%, UPS 18.5%. ठीक है. Employee contribution that was missing in OPS, NPS में 10%, UPS में भी 10%. ठीक है. पेंशन अमाउंट कितनी थी, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे. In NPS it was market linked. Again in your UPS it is 50% of the last basic pay. तो इस तरीके से you can make you can differentiate these 3 and make a table, so that will be easy to revise and remember also. 50 years of your national emergency. So 12th June 1975. ठीक है. This is important day. Why this is important? Because the Allahabad High Court invalidated the election of Indira Gandhi. ठीक है. So in the case was Indira Gandhi versus Raj Narayan case, if you remember, and the your emergency it was declared on 25th June. ठीक है. And it continued till March 1977. Right. So basically what was the case? The case was regarding misuse of government machinery during the 1971 elections, and it was alleged that the RPA, that is your Representation of the People Act 1951, that was violated, and the court, they declared the elections void. Okay. And she was disqualified from the PM post, and appeal was filed in the Supreme Court of India. So these are some of the developments you should know. Now this national emergency, it is under your Article 352, and it can be on the grounds of war, external aggression or armed rebellion. ठीक है. पहले क्या था, internal disturbances था. So in 38th amendment of 1975, so multiple proclamations were allowed of this, whereas this was undone by your 44th amendment of 1978. So it replaced first thing internal disturbance by armed rebellion. ठीक है. तो उसको और clarity दी, and they further strengthened the safeguards. Now coming to your procedure and duration, so it is declared by the president and it has to be approved within 1 month by special majority. ठीक है. So the timeline is that it can be done for 6 months at a time, and it can continue indefinitely but with approvals. Obviously उसको approve करना पड़ेगा. Then in terms of revocation, it can be revoked by the president anytime, and the Lok Sabha also it can revoke if they pass the resolution by a simple majority. Now coming to your judicial review,
38th अमेंडमेंट के बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू को बार कर दिया गया था, लेकिन उसको अनडन किया गया बाय 44th अमेंडमेंट. So the case Minerva Mills versus the Union of India case 1980. So yes, the emergency it can be challenged if the reasons are malified. अब बात करें अगर हम इम्पैक्ट की, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है. सो बेसिकली योर सेंटर इट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट विद इन दिस डोमेन. In terms of legislation, the parliament can legislate on the subjects under the state list, and the president it can also alter the center state revenue distribution. So the financial impact is also there. Now in terms of impact on legislature, ठीक है, तो आपका जो लोकसभा का टेन्योर होता है इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year एट अ टाइम. स्टेट असेंबलीज दिस सिमिलर थिंग कैन बी डन, and maximum 6 months after your emergency ends. So this is the limit in case of the impact on legislature. Now in terms of your impact on fundamental rights, so article 358, according to this only article 19 is suspended, that too during your external emergency. Now under article 359 the president can suspend the enforcement of the affairs. ठीक है, द एक्सेप्शन इज देयर योर आर्टिकल 20 and 21, दीज टू दे रिमेन प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द माइनर डिटेल्स यू शुड नो रिगार्डिंग योर नेशनल इमरजेंसी. तो साथ ही साथ आपका जो स्टेट बेस्ड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जस्ट रिवाइज दोज ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ योर होम अफेयर्स दे हैव expanded the OCI cancellation rules. ठीक है, सो द अमेंडमेंट हैज़ बीन डन अंडर योर सेक्शन 7D of your Citizenship Act of 1955. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस OCI scheme? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस वाज लॉन्च्ड इन योर 2005 अंडर योर सिटीजनशिप एक्ट ओनली. ठीक है, अमेंडमेंट करके. सो दिस इज बेसिकली फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम PIO बोलते हैं, दोज पीपल हु आर होल्डिंग द फॉरेन पासपोर्ट्स, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीज़ा. ठीक है, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दिस इज़ नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप. नो, ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द की फीचर्स है? सो देर इज़ नो नीड फॉर पुलिस रजिस्ट्रेशन, यू कैन स्टे फॉर एनी ड्यूरेशन. नाउ देर आर अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख OCI होल्डर्स वर्ल्ड वाइड, मेजरली आपका जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यहाँ पर है. नाउ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दे शुड बी a citizen or eligible to be a citizen on 26th January 1950. ठीक है, तो वो क्राइटेरिया होगा. देन दे कैन बी डिसेंडेंट्स ऑफ सच पर्सन्स और दे कैन बी स्पाउस इफ द मैरिज हैज़ बीन फॉर मोर देन 2 years. ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 2 years. नाउ देर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स ऑल्सो, द सिटीजन्स पास्ट और प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश. So this is with respect to eligibility. Now in case of restrictions, so they do not have any political rights, like they cannot vote, they cannot contest the elections, they cannot hold constitutional posts. So there is no public employment under your article 16. Now special permission is required for work such as your research, journalism, missionary work, etc., mountaineering, visit to protected areas or restricted areas. ठीक है, now this overseas citizen of India, this particular thing, it can be cancelled also, this can be revoked also. Like there are certain existing grounds: fraud, misrepresentation, disaffection to the constitution, assisting the enemy during the war, acts against the sovereignty, security, public interest. तो ये existing grounds थे, इनको भी expand किया गया. कैसे expand किया गया कि if the imprisonment has been for more than or equal to 2 years, first thing, or the charge sheet for offenses, ठीक है, it can lead to punishment of equal to or more than 7 years. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. एंड रिमेंबर दैट OCI एंड NRIs दे आर डिफरेंट. सो बेसिकली OCI क्या होता है? ही और शी इज़ अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वेयर एज NRIs आर योर इंडियन सिटीजन्स हु आर अब्रॉड.
ठीक है. So here OCI they get lifelong visa, whereas NRI they do not need this. So NRIs they can vote, they can get the jobs. There are no such restrictions with respect to certain kind of activities जो कि OCI के केस में है. मूविंग अहेड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो बहुत न्यूज़ में है डिफरेंट रीजंस की वजह से. सो सर्टन डिटेल्स यू शुड नो. नाउ बेसिकली दिस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग से भी डील करता है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन से भी डील करता है. एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट इन 1956. ठीक है, 1957 में इसको रीनेम किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस इज अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. Now the headquarters they are situated in New Delhi, but they do have regional offices like in Mumbai, Chennai, Chandigarh, Kolkata, Delhi, and it is headed by a director who is known as the Director of Enforcement. So आपके different acts हैं, जैसे laws हैं, PMLA हुआ, Prevention of Money Laundering Act of 2002, FEMA that is your Foreign Exchange Management Act of 1999, then Fugitive Economic Offenders Act of 2018, then your 1974 COFASA Act, COFPOSA Act, right? So in case of your FEMA, they do have quasi judicial powers also, right? So these are some of the minor details that you should know, that they have investigating powers, they can summon the individuals, they can record the statements which are admissible as evidence also. Then they have enforcement powers, they can arrest the accused with recorded reasons, they can inform the grounds of arrest. They also have financial powers कि वो attach कर सकते हैं property up to 180 days. They can confiscate the assets after conviction under your PMLA. So these are some of the things that you should know with respect to Enforcement Directorate. Yes, moving ahead now, CEC. Again important. So Chief Election Commissioner, basically she is the head of the Election Commission of India, and they are responsible for the elections to the Parliament, to the state legislature, to President as well as Vice President. Article 324 अगर आपको पता है, that it establishes the Election Commission of India and provides for the superintendence, direction and control of elections. Right. So basically the idea is to have independence of the electoral process in India. So this CEC, they are appointed by your President of India. Now as per the 2023 Act, so the committee who will be choosing this CEC, it will include your Prime Minister and the Leader of Opposition of Lok Sabha and the Union Cabinet Minister as nominated by the Prime Minister. तो अगर आप देखोगे कमेटी में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट से लिंक्ड है. ठीक है. सो द टेन्योर ऑफ इज 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years. नाउ एज पर आर्टिकल 324 द removal process is same as your removal of the Supreme Court judge, that is your article 124. ठीक है. तो the grounds, whatever the grounds, the proven misbehavior and incapacity. सो बेसिकली क्या होता है कि एक मोशन इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में विच रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ द एमपीज, फिर एक कमेटी इंक्वायर करती है, देन इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज एंड द फाइनल रिमूवल इज देन डन बाय द प्रेसिडेंट. अदर इलेक्शन कमीशंस दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ योर CEC. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड इज देयर. Right. So the other articles like 325, 326 are adult suffrage, 327 the legislation power of election on election, parliament on elections, article 328 how the state legislatures can legislate. So these details you should be knowing. Next, 16th Finance Commission. So under article 280 the Finance Commission, it is a constitutional body and it is constituted by your president after every 5 years. So basically ये decide करते हैं कितना tax devolution होगा, कितना grants in aid होगा, क्या fiscal reforms चाहिए, basically to ensure fiscal federalism and equity. तो अभी 16th Finance Commission ने अपना रिपोर्ट दिया जो कि चेयरमैन थे अरविंद पनागिरिया, and the period here was 2026-27 to 2030-31. So the other members like Ajay Narayan
नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राधाक्ष, सौम्या कांति घोष. So these kind of details, though not so important, एक just reading would suffice. तो अब क्या रिकमेंडेशंस हैं? बेसिकली द स्टेट शेयर इट वुड बी सेम एज द 15th कमीशन, दैट इज योर 41%. What is the criteria now? So income distance, it will have the maximum weightage, that is 42.5%. ठीक है, इनकम के ऊपर. पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू योर 2011 17.5%. थर्ड, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दैट वुड बी 10%. फोर्थ, एरिया, अगेन 10%. फॉरेस्ट 10%. जीडीपी कंट्रीब्यूशन 10%. तो बेसिकली जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक नया क्राइटेरिया है. एंड द टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड. सो अगर हम ग्रांट्स इन एड की बात करें, सो द टोटल इज अराउंड 9.47 लाख करोड़ रुपीज़ एंड द फोकस एरियाज अगेन लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्टेट स्पेसिफिc grants, they have been discontinued. In terms of local body grants, the rural, they get more grants as compared to your urban, and the structure is that 80% would be basic and 20% would be your performance based. तो यहाँ पर अब क्या नए फीचर्स हैं? सो बेसिकली अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स वुड बी देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स वुड बी देयर फॉर द सिटीज़. In terms of your disaster management, so 2.04 lakh crore the total corpus is there, and the sharing would be 90-10 between for the northeastern and the Himalayan states, and 75-25 for the other. The center deficit, it would be 3.5% by 2030-31. States, it would be 3% of their GSDP, and the debt reduction would be 77.3% to 73.1% of the GDP. So there are other reforms also with respect to, say, power sector, subsidies, public sector enterprises, etc., that you can go through on your own. Ladakh statehood now. So on, if you remember, 5th August 2019, the Article 370 it was abrogated, and Jammu and Kashmir, it was basically bifurcated, and Ladakh became a union territory, so the legislature was not there. So this triggered demand now for the full statehood and inclusion under your 6th schedule. अब क्यों है ये demand for this basically statehood? Because number one, democratic representation. इलेक्टेड मतलब इलेक्टेड आपका legislature should be there. Then greater legislative autonomy, control over natural resources, land, environment, etc., and preservation of local identity. So these are some of the reasons. So अगर हम बात करें अब आपके 6th schedule की, so Article 244 and 275, these are the important articles, and this is applicable to your tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ठीक है, तो क्या है इसका रीज़न? टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस एंड टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स, कल्चर एंड लैंड. ठीक है, सो की फीचर्स, वन इज़ योर ऑटोनोमस काउंसिल्स. ठीक है, विच विल बी योर इलेक्टेड बॉडीज एंड दे विल हैव पावर्स लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव पावर्स. फिर दे कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू लैंड यूज, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, social customs. In terms of judicial powers, and there would be village courts for local disputes. Financial powers, they can levy taxes on land, trade, profession, markets, and they can also get grants from a consolidated fund of India. Governor, they can alter the boundaries, they can include or exclude the areas, they can approve the council laws. Okay, so these are some of the provisions which are important. 130th constitutional amendment. ठीक है, so this was referred to your JPC, that is your joint parliamentary committee. So basically इससे क्या amend होता है? आर्टिकल आपके 75, 164 and 239A. So 239 is the Delhi governance, 75 is your Union Council of Ministers, and 164 is State Council of Ministers. So what is the core provision here? So the condition is the minister arrested and detained for 30 consecutive days, of which or the offenses they are punishable with more than or equal to 5 years of imprisonment. तो ऐसे में what are the consequences? अगर ये conditions हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो
if it is a union member, they can be removed by the, they have to be removed by the president. State है तो governor, और अगर Delhi है by the LG. If no action is there, automatic removal would be there by the 31st day. ठीक है. Reappointment clause भी है, that the minister can be reappointed after the release. ठीक है. So this ensures that there is a proper balance between your accountability as well as the presumption of innocence, right? DPDP rules now. So the Digital Personal Data Protection Rules of 2025, they were notified in November. So this was after your Puttaswamy versus Union of India 2017 case, according to which privacy is a fundamental right, and they operationalized your DPDP Act. ठीक है, and the full compliance would come by May 2027. So certain provisions are there which will have immediate effect, for example data protection board provisions. Certain, for example the consent manager framework, that will be effective November 2026. Okay, so the certain provisions like data processing, it will only be done with clear, specific and informed consent. The notices, they must be in plain language, purpose specific. ठीक है. Rights of the data principle, the right to correct, right to erasure, right to grievance redressal, right to withdraw consent. ठीक है. Then there are certain obligations of the data fiduciary. They must follow the purpose limitation, data minimization, storage limitation, and they should maintain proper records for audit, for regulatory review. फिर आपकी बात आती है चिल्ड्रंस डाटा प्रोटेक्शन की. अगेन इट रिक्वायर्स वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट, एंड देयर शुड बी complete prohibition on tracking, profiling of the minors. ठीक है. The mandatory reporting of data breach to the Data Protection Board of India. Then it also operationalizes section 44 of the DPDP Act. ठीक है. तो बेसिकली क्या था, earlier the RTI Act, it was amended, and the section 8(1), that it removed the larger public interest exception. लेकिन अब क्या है, the personal data is now generally exempt from this disclosure, right? So these are some of the things that you should know. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली क्योंकि पॉलिसी भी आई है, एक्ट भी आया है. सो बेसिकली टू रिफॉर्म द स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया. सो देयर वुड बी अ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड which will be the apex body, regulatory body for all kind of sports in India, and it will oversee all the national sports federations including your BCCI. So this is important. RTI applicability, so the sports bodies which receive government funds, they will be treated as public authorities and they will be covered under your RTI Act. Then there are certain leadership reforms, like for your president, treasurer, secretary general, so they either must be sports person of merit or they should be experienced person, one term in executive body. ठीक है. Then national sports tribunals would be set up for sports dispute resolution. Electoral reforms are there. ठीक है. So the government would create a panel of electoral officers. Central government, they can also exempt any sports body. So this is one concern which is with respect to your executive discretion, right? So this is something which is disputed in this particular act. Now साथ में ही आपकी जो खेलो भारत नीति है, which is your national sports policy of 2025, it has focus on talent development, infrastructure, economic dimensions like PPP, your CSR, then social inclusion, fitness culture. तो वो सारी चीज़ों पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी में बात हुई है. SIR, that is your special intensive revision. ठीक है. So this is basically a document based voter verification drive which is being conducted after almost 20 years to update and purify the electoral rolls. तो बेसिकली क्या पर्पस है कि सिर्फ जो एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स हैं वो ही वोट करें, वो ही रजिस्टर हों एज वोटर्स. ठीक है. सो इट इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑब्वियसली बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ CEC. सो यहाँ पर कुछ आपके इम्पोर्टेंट
फंक्शनरीज हैं जो आपको पता होना चाहिए. वन इज़ योर BLO. ठीक है, BLO इज योर बूथ लेवल ऑफिसर. सो दे विल बी कवरिंग अराउंड 1000 वोटर्स एंड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग द इनैमोरेशन फॉर्म्स. तो बेसिकली वो आइडेंटिफाई करेंगे वो वोटर्स जो मर गए हैं या शिफ्ट कर गए हैं. फिर आप इनकी हेल्प करेंगे BLAs, बूथ लेवल एजेंट्स. सो बेसिकली दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे विल बी असिस्टिंग दैम इन द वेरिफिकेशन. फिर जो आपकी DM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अगर कोई अपील करना चाहता है तो फर्स्ट अपील विल बी डेल्ट विद देम, बाय देम. फिर जो सेकंड अपील है दैट विल बी डेल्ट बाय योर CEO, दैट इज योर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राइट. Right to die with dignity. So this was again in the news if you were following. तो एक तो कर्नाटका ने इम्प्लीमेंट की है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आफ्टर योर केलरा, एंड सेकेंडली इफ़ यू रिमेंबर द केस ऑफ हरीश राणा, ठीक है, जो इसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए यस किया था. सो बेसिकली दिस particular concept, right to die with dignity, it is derived from your article 21, that is right to life. ठीक है, सो बेसिकली वी आर इंक्लूडिंग द राइट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग इन टर्मिनल इलनेस. तो ऐसे में क्या इंश्योर कर रहे हैं कि देर इज ऑटोनॉमी इन एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस. तो यूथेनेशिया इज बेसिकली योर मर्सी किलिंग. सो बेसिकली यू आर एंडिंग द लाइफ टू रिलीव द सफरिंग ऑफ द पेशेंट. तो यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पैसिव, एक होता है आपका एक्टिव. सो एक्टिव इज इलीगल इन इंडिया, ये हम करते हैं बाय डायरेक्ट एक्ट कि इंजेक्शन दे दिया, लीथल इंजेक्शन दे दिया. पैसिव यूथेनेशिया इट इज़ लीगल. सो वी आर बेसिकली विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट. यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड भी अलग चीज़ें हैं. इन यूथेनेशिया द डॉक्टर इज एडमिनिस्ट्रिंग द सब्सटेंस, whereas in case of assisted suicide the patient is self administering the drug. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक अरुणा शॉनबर्ग के केस 2011 का था, जब उन्होंने बोला था कि येस पैसिव यूथेनेशिया इज़ अलाउड अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस, तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था इन दोनों टाइप्स में. इन द 2018 केस ऑफ कॉमन कोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो दे रिकॉग्नाइज दिस राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड दे लीगलाइज द लिविंग विल कंसेप्ट विच इज़ द एडवांस डायरेक्टिव. ठीक है. सो एनी एडल्ट दे कैन स्पेसिफाई द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस. दिस रिक्वायर्स विटनेसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. सो इट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स व्हेन द पेशेंट बिकम्स इनकेपेबल. ठीक है. तो यहाँ पर अप्रूवल के लिए देर आर सर्टन सेफगार्ड्स लाइक 2 मेडिकल बोर्ड्स ऑफ 3 डॉक्टर्स ईच. So in administrative oversight, the DHO, that is the district health officer, he or she is involved. In case of judicial oversight, आपका GMFC का approval चाहिए, and this has to be intimated to the High Court registrar, right? So these were the important topics that we wanted to discuss with respect to your prelims exam from your polity subject. So in the subsequent video, we will be taking geography related topics. Thank you.